let us explain you the exercise part of chapter number 13, that is electric and its effect. Electric current and its effect. So first we will start with fill in the blanks. First fill in the blanks. When we connect two cells to form a battery, we should connect the positive terminal of one cell to the dash terminal of the other. तो एक साइड में पॉजिटिव है तो दूसरे साइड में क्या होगा, नेगेटिव. सेकेंड, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द कनेक्टिंग वायर should be made of a dash. Made of what? Made of a conductor. Next, third one. A device that is used to open or close an electric circuit is called a dash. What it is called? Switch. Fourth one. A dash works on the heating effect of electric current. A fuse. Answer will be fuse. Fifth one. In an electric bell, the electromagnet is magnetized when the switch is dash. When the switch is what? On. The correct option. First one. What is a drawing of an electric circuit with a standard symbol called? It is called what? It is called a circuit diagram. Second one. What happens when the switch is on in an electric circuit? जब स्विच ऑन होता है तो क्या होता है? ऑप्शन इज सी, द सर्किट इज क्लोज्ड एंड द करंट फ्लोज थ्रू इट. थर्ड वन. व्हाई डज द फिलामेंट ऑफ एन इनकैंसेलेंट बल्ब ग्लो? सो व्हाई इट इज ग्लो? इट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक current. Fourth one. What is the part of an heating appliance containing a tightly wound coil that heats up called? It is called option B, element. Fifth one. What is an electric fuse? A safety device. Option is B. Sixth one. What is the role of an electric switch? To open or close an electric circuit. Option is A. Seventh one. How many electric cell an electric battery consist of? It consists of 2 or more. Eighth one. What effect of current do an electric toaster and a filament light bulb use? Option is A. The heating effect of electric current. Ninth one. What happens when an electric current is passed through a coil wrapped around an iron piece? Option is C. Iron piece becomes magnetic. 10th one. What happens to magnetic effect of an electromagnet when electric current is switched off? It becomes 0. Option D. Now, very short answer type. Give one word for the following. First one. 2 or more cells joined together. What it is called? Battery. Second one. Thin wire that glows in an incandescent light bulb. It is what? Filament. Third. A device that limits the amount of current in a circuit. जो करंट को लिमिट करता है, रोकता है, वो है फ्यूज. Fourth one. A long wire that has been wound many times into a tightly packed coil. तो tightly packed coil कौन सा वायर है वो? सोलेनॉइड. Fifth one. The part of an electric bell that is attracted to the electromagnet when switched on. What it is? Soft iron strip. Let us see short question answers. First, name any 4 components of an electric circuit. Give their electrical symbol. Come to page number 199. In page number 199, you have to write this whole table and you have to draw this cell with symbol, again battery with symbol, switches with symbol, bulb with symbol, wire with symbol. ये पूरा आपको करना है. Okay? Now, second question.
Second question, short question is, draw a circuit diagram when an electric current will flow at a component that will help to open and close the circuit and label it. So for this you come to page number 200. So अब 200 पेज में आके देखो कि आपको इसमें क्या करना है कि ये सिंबल, आपको ये जो सर्किट डायग्राम है, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके, ये आपको दिया गया है और इधर है ऑन स्विच, ऑफ स्विच. तो ये अभी स्विच कौन से पोजीशन में है, ये स्विच जो है ये क्लोज्ड है, उसको ओपन करना है और ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं. देयर शुड बी अ सोर्स, देयर शुड बी मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, द वायर शुड बी हैव एनी डिसकंटिन्यूटी गैप्स, कोई discontinuity should not have any discontinuity gap. The only component that have disconnected in the switch when it is open, there is a discontinuity and current does not flow in the circuit. तो ये तीनों पॉइंट्स आपको लिखने हैं. First question and second question we did. Now third question, explain the heating effect of electric current. So the passage of electric current heats it up. Then in an incandescent bulb the electric current passes. जैसे उसको हीट कर दिया तो अभी करंट उसमें पास हो गया. सो थ्रू अ वेरी थिन वायर, उस वायर को एक स्पेशल मटेरियल से बनाते, उस मटेरियल का नाम है टंगस्टन. और ये पूरे चीज़ को क्या बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज द फिलामेंट. सो व्हेन द बल्ब इज स्विच्ड ऑन द फिलामेंट गेट्स हीटेड. जैसे बल्ब का स्विच ऑन हुआ इसका मतलब फिलामेंट जो है वो हीट हो गया. दिस इज ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक current. Now fourth question, what is a magnetic effect of electric current? So answer is, when a current pass through a wire it behaves like a magnet. जब करंट वायर में पास होता है तो उसको वो कैसे बिहेव करता है, बिहेव करता है एज अ मैग्नेट एंड देयरफॉर डिफ्लेक्ट्स द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कॉम्पस. इसलिए मैग्नेटिक नीडल उसका कॉम्पस का हिलता है या डिफ्लेक्ट करता है. सो दिस इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन एन इलेक्ट्रिक बेल. तो क्या पर्पस है, क्यों रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट इन एन इलेक्ट्रिक बेल. An electric bell has an electromagnet that pulls a strip of iron attached to the hammer. So this makes hammer hit the gong to ring the bell. तो इलेक्ट्रिक बेल क्या है, जब इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है तो उसको पुल करता है अ स्ट्रिप ऑफ आयरन अटैच टू द हैमर. सो इसके वजह से हैमर जो है वो हिट करता है गोंग को और गोंग को हिट करने से जो है बेल रिंग होता है. तो इसीलिए पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द इलेक्ट्रिक बेल इज दिस. फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, draw two electric circuits showing two different situations when an electric current will not flow through the circuit. Explain the reason in each. So answer will be what? The important points what we have to remember while drawing the circuit diagram, there should be a source. वहाँ पे एक source होना चाहिए जहाँ से electricity आ रहा है. There should be one electric cell. The wire should not have any discontinuity or gap. So the only component that can have a discontinuity is the switch. Switch discontinue हो सकता है on off mode में. When it is open there is a discontinuity, मतलब वो बंद हो गया है and current does not flow, फ्लो नहीं कर रहा है सर्किट में. तो स्विच इज ओपन, स्विच इज और सोर्स इज मिसिंग, अभी उसमें करंट नहीं है. सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज. So to know this, to prevent the electric appliances from getting damage, जैसे डैमेज ना हो जाए तो from excessive flow of current हमको बचाना है. So a safety device which is used for that is what? It is called as the fuse. It is used in the electric circuit. So an electric fuse prevents large amount of current from flowing into any appliances or any device as it cuts off supply of electric current and इसको equipment को बचाता है. So the electric fuse works on the principle of heating effect of current. ये कौन से principle पे काम करता है? heating effect of current पे काम करता है. That means the amount of heating caused depends on the amount of current flowing through the wire.
जितना हीटिंग होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है. तो ग्रेटर द करंट द मोर इज द हीट प्रोड्यूस्ड. An electric fuse consists of what? Thin wire, usually placed inside the glass or a ceramic cartridge. So, this wire is made of a material that melts when it is get heated. जब वो हीट हो जाता है तो वो वायर जो वो मेल्ट हो जाता है. एग्जाम्पल ऑफ द मटेरियल दैट इज यूज्ड इन द फ्यूज वायर, कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है? लेड, टीन, alloy of lead, and alloy means the mixture of two metal, lead and tin, aluminum, zinc, etc. It is designed in such a way that only one certain amount of current can flow through it. If current exceeds this amount, अगर current exceed कर जाता है इतना, तो heating in the wire will cause it to melt. तो वायर मेल्ट हो जाएगा. We say that the fuse blows मतलब वो मेल्ट कर गया है. This breaks the circuit and stops the flow of current in the circuit. तो करंट जो है वो स्टॉप हो. So after breaking the circuit, it stops the flow of current in the circuit. Now third question, draw a rough figure of simple electromagnet. So in this you have to draw this figure from your textbook. And how we can find out if the magnetic or not? So if we connect an electromagnet to a circuit and its switch is on, we see that it attracts the iron such as safety pin, just like a magnet. So इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है जब स्विच ऑन रहता है वो किससे अट्रैक्ट होता है? आयरन से अट्रैक्ट होता है. Students, write all the question answers short and long in your Rajlakshmi ma'am's notebook of physics chemistry.